Respected Dr. Rajesh Parikh has joined us. He is joining from Mumbai. Uh, so let us begin. I'm so sorry. I was just going over the questions and making sure that the latest research validates some of the answers that I had. So, my Okay. apologies. So we will use the same system like earlier for the same system of communication. Simple Hindi and Hindi mixed English wherever it is required. मैं भी हिंदी ही बोलूँगा और ताकि जो हमारे गांव के विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, वो भी समझ सकें क्योंकि लास्ट टाइम एक टर्म आई थी कि कम्युनिटी स्प्रेड. So in India, what witness is the community spread. This time during this wave, nobody is using the term the community spread. We are witnessing the deaths around us in our neighborhood, in families, among the friends, and infection. I would say that here at my place, out of 100, 70% of the people are getting infected on record or off the record. When I go to a medical shop, तो मैं देखता हूँ everybody is buying cough syrup um, or Calpol or paracetamol and all those tablets, which indicate they are suffering with the COVID-19. So let us begin, sir. Uh, audience, namaskar. I am Lalit Mishra. So at Indology Foundation, as we promise to have, we are here with the second phase of the COVID-19 पैनल डिस्कशन. हमारे साथ हमारे सभी एक्सपर्ट्स हैं. तो आज के फोरम में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश पारिक, जिनसे आप पिछली बार मिल चुके हैं, फ्रॉम द जसलोक हॉस्पिटल. वो उसके डायरेक्टर रिसर्च हैं और न्यूरो साइकेट्रिस्ट भी हैं वहाँ पर. और कोविड-19 पर इंडिया की सबसे पहली की बुक्स में से 2 किताबें डॉक्टर राजेश पारिक ने ली. तो डॉक्टर पारिक के साथ में जो हमारे नए गेस्ट हैं, नए मेहमान जो हैं, वो हैं वेल नोन, included in the list of world's 100 most influential people of the world, Dr. Ravi Gupta from Cambridge, London. He also heads a lab in साउथ अफ्रीका. और उन्होंने जितने भी वेरिएंट्स हैं, इंडिया के सारे वेरिएंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि सारे वेरिएंट्स की क्लिनिकल साइंटिफिक स्टडीज की हुई है. और हमारे साथ में हैं लंदन से ही डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता. वो is one of the most experienced COVID expert in London and I think also in India, क्योंकि जब से कोविड आया है since 1.5 years, वो कोविड पेशेंट फ्रंट एंड एक्सपर्टीज ही इज प्रोवाइडिंग टू कोविड पेशेंट्स, सेविंग देयर लाइफ. सो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे. और हमारे साथ हैं BHU बनारस से डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी, जो अपनी ही इज साइंटिस्ट ऑफ द जेनेटिक्स. तो वो जाने जाते हैं अपनी जीन्स पर जो रिसर्च की है. उन्होंने इंडियन जीन ACE2 पर रिसर्च की है और पहली लास्ट ईयर उन्होंने पाया था कि इंडियन ACE2 जीन has some variance with the वेस्टर्न यूरोपियन ACE2 जीन. उसके बाद फिर उनकी दूसरी रिसर्च आई, जिसने एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनकी रिसर्च को इनवैलिडेट किया. वो रिसर्च भी सेल पे, आई थिंक वही बताएंगे, आई थिंक सेल जर्नल पे पब्लिश हुई. और अब की थर्ड रिसर्च आई है लेटेस्ट, जिस पर हम उनसे बात करेंगे. तो दिस इज द फोरम. और साथ में हमारे साथ हैं प्रवीण मिश्रा जी, हु इज द को-फाउंडर विद अस. और आप उन्हें जानते हैं, वो मीडिया, ही इज अ मीडिया मैग्नेट ऑल्सो. तमाम चैनल्स पर, सब जगह पर आप उनके थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स पर जाते होंगे. तो प्रवीण मिश्रा जी प्रवीण है हमारे साथ में. इट्स अ ग्रेट प्लेजर. लास्ट टाइम पे भी वो थे पर ही वाज नॉट ऑन द कैमरा. तो दिस इज द फोरम. तो सर, आज का पहला क्वेश्चन जो तैयार किया था मैंने, वो डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे के साथ में ही था, क्योंकि अभी हाल ही में जस्ट लेटेस्ट कुछ दिनों पहले उनकी रिसर्च आई है और उनकी रिसर्च कहती है सेकंड वेव के बारे में. तो सर, आपसे सवाल ये है डॉक्टर चौबे जी
जी कि सर। ये जो सेकंड वेव है ऑफ इंडिया जो हम देख रहे हैं, it's a scientific phenomena or a perception of rise in the numbers of patients, कि बहुत ज्यादा पेशेंट्स एक महीने में आ गए हैं तो हम इसे सेकंड वेव कहने लगे हैं, या ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस वर्ड, बिहाइंड दिस टर्म? आप क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह की जो वेव्स टर्मिनोलॉजी आ रही है उनको? जी ललित जी, देखिए, जो सिचुएशन चल रही है अभी, और बहुत सारी वेव्स बहुत सारे कंट्रीज में आ रही हैं, उससे बहुत ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि वेव्स आ रही हैं तो बहुत नुकसान कर रही है। लेकिन इंडिया में जो सेकेंड वेव है वो बड़ी यूनिक तरीके की रही, और ये इसलिए यूनिक तरीके की रही कि जो पहली वेव थी वो ऑलरेडी एक तरीके से डिमिनिश हो रही थी, और उसी बीच में हमारे बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया था, इवन हमारी पब्लिक ने भी मान लिया था कि somehow either we are resistant to the virus or the virus is getting weaker। कुछ ऐसा इंडिया में हो रहा है जिसके वजह से पूरे इंडियंस बहुत अच्छे से इम्यून हो चुके हैं, और आगे चल के ये वायरस उनको कुछ नहीं करने वाला है। पूरा जो कोविड प्रोटोकॉल था उन्होंने यूज करना बंद कर दिया था, और मेरे से भी कई बार लोगों का डिस्कशन हुआ जिसमें कि लोगों ने मतलब इतनी बार मेरे से आर्गुमेंट किया कि नहीं, अब कोई वेव नहीं आएगी और कुछ नहीं होने वाला है, और वायरस के जो वेरिएंट्स आते हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। देन देयर वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विथ अस दैट व्हेन the first wave was close to finish, it was like September to November, we used 14 districts, and these districts were distributed almost all over regions of India. We did a sero survey, almost 200-300 samples everywhere randomly, to the people who actually live in the street or work on the street. So they are the one who are most exposed people. So we wanted to know what is the upper boundary of the zero positivity in each and every district. तो वहाँ हम लोगों को दिखा कि ऑन एन एवरेज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो 5 से 7% भी था, 5 to 7% zero positivity was present. But in many of the districts, including Varanasi and the regions of Purvanchal, the frequency was even more than 40%. So the time was something like September to November. So September to November जो time period था, उसके बाद usually there were several papers from international authors, and there they said that this antibodies actually they lives around 6 months or even more. So based on this, even independently, ICMR also did the same kind of work on a larger number of samples. So they have also found out that in many of the regions, even 50% of the people were seropositive. So based on that, several other experts, they started to infer that many of the regions, they already have achieved the herd immunity. And because the work, many of the scientists, they have already told that this antibodies is going to live almost 6 months in the body of a person. So during at least up to June, there will not be any second wave, or if there will be any second wave, the impact of the second wave would be very, very less. So, but this was not right, and the second wave has arrived, and this second wave has made a big impact on India because there was no lockdown and several other things. There were hundreds of factors. We are not going to discuss those ones, but let us come directly to the point. So what we started to do in March in Varanasi, that we collected some, we actually revisited those people who already showed the seropositivity. तो हम लोग 100 लोगों को वाराणसी में विजिट किए जो कि नवंबर में जिनमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। हमने उन्हीं लोगों को फिर से उनका एंटीबॉडीज टेस्ट किया, और वहां हम लोगों ने पाया कि आउट ऑफ 100, 93 लोगों में एंटीबॉडीज डिमिनिश हो गई है, मतलब उनके एक
बहुत लो लेवल के एंटीबॉडीज उनमें प्रेजेंट है और केवल 7 लोगों में जो है वो एंटीबॉडीज ठीक ठाक प्रेजेंट थी। तो उसके बेसिस पे हम लोगों को लगा कि जो सेकेंड वेव है, क्योंकि एक तरीके से जो हमारी इम्यूनिटी का वॉल था, वो जो ब्रेक था इन 40% लोगों के थ्रू, दैट वाज डिमिनिस्ड। वो वॉल जो है वो ब्रेक हो गया। और उसके बाद फिर बिकॉज वायरस वाज ऑलरेडी देयर, वायरस ऐसा नहीं था कि खत्म हो गया था हमारे सोसाइटी से। और फिर वायरस के लिए सारे लोग जो है वो एक तरीके से नईव हो गए, एंड देन दिस वायरस हैज अगेन स्टार्टेड टू इन्फेक्ट एवरीबॉडी। तो जो री इन्फेक्शन का केसेस है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा कि री इन्फेक्शन जितने सारे लोगों में हुआ उसमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा। लेकिन जो 50-60% लोग जो नईव थे, हु हैव नेवर बीन इन्फेक्टेड, उनमें से मैक्सिमम लोग थे जिनकी डेथ हुई है या जो कि हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा था, जिनको कि वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब है कि समहाउ हम लोगों ने इसको जो प्रेडिक्शन था वो ठीक से सेंस नहीं कर पाए, और हम लोग जो है वो इस जो कोविड का पूरा प्रोटोकॉल था उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाए, जिसके वजह से ये सेकेंड वेव इसने हमको बुरी तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया। तो डॉक्टर चौबे, आपने कहा कि सेकेंड टाइम जो इन्फेक्ट हुए हैं उनकी डेथ, वो आईसीयू कैंडिडेट हुए, उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी? नहीं, उल्टी बात है। जो नईव लोग थे, मतलब जो इन्फेक्शन जिनको नहीं हुआ था, उनको ज्यादातर उसमें वही थे जिनको इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ था, उन्हीं को वेंटिलेटर से आईसीयू की जरूरत पड़ी, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे। क्योंकि इसमें बहुत क्लियर है कि अगर हम इम्यूनोलॉजी के सिस्टम को देखें तो हमारे पास मेमोरी बी सेल्स हैं जो कि तुरंत आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि the foreign particle, the antigen is the same, coming from the same kind of virus, and then they just produce the antibodies very quickly. तो उस केस में उनको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्टेड थे फर्स्ट वेव में, वो सेकेंड टाइम इन्फेक्ट होने पे उनमें सीवियरिटी जनरली कम रही। ओके, सो डॉक्टर चौबे, आपने कहा कि कुछ समय के बाद में जो एंटीबॉडीज थी वो डिमिनिश्ड हो गई। सो इसका रीजन आप क्या समझते हैं कि क्या मेमोरी जो है, कहा आपने मेमोरी एंटीबॉडीज की है, वो मेमोरी चली गई या कम थी, या एंटीबॉडीज की स्ट्रेंथ कम हो गई, या वायरस हमारा स्मार्ट हो गया, म्यूटेट हो गया? जी नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इसमें हम लोग को खाली एंटीबॉडीज का कोई मेजर नुकसान यही हुआ खाली कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन थी वो इस वायरस के लिए प्रोन हो गई। तो जो हमारे लोग पहली बार इन्फेक्टेड थे वो भी इस वायरस को इसके लिए कैरियर बन गए, भले उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाओ, बट दे वेर कैरियर। तो वो जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी उनको बहुत इजीली वायरस को ट्रांसमिट करने लगे। लेकिन जो लोग पहली बार इन्फेक्टेड थे, मतलब ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके थे, उनके लिए ये सिचुएशन थी कि उनमें एक मेमोरी बी सेल होती है, वो मेमोरी बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज बना दी, जिससे उनको बहुत रेयर केसेस में ही बहुत कम लोग थे जिनको कि हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा। लेकिन जो एंटीबॉडीज खत्म हुई उसके बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं है अभी तक। लेकिन जो मेरी अपनी मतलब सोच है, मुझे ये लग रहा है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फर्स्ट वेव वेयर एसिम्प्टोमेटिक। तो एसिम्प्टोमेटिक में मैं इम्यूनोलॉजिस्ट नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों में जो एंटीबॉडीज थी उनका अमाउंट यूजुअली कम बना, ठीक है, और इसलिए जो है वो बहुत क्विकली डिमिनिश हो गई। I would like to request Dr. Ravi to give his opinion on this, being the expert of virology and of this subject. So, sir, what Dr. Gyaneshwar Chaubey has said about his research is before you. He's saying the antibodies could not survive in good strength for more than 4 months or so. And because of the deplete of the antibodies, decline of the number of antibodies, this second wave has come, because we do not have antibodies in our body, in our immune system, to fight back with the virus SARS-CoV-2. So here the question arises, how come the antibodies have gone?
Dr. Chaubey just cited one example that it is because of asymptotic patients who has the mild symptoms, and it is in their body, their immune system, these antibodies have gone before we've gone earlier. So that is what he said. What is your view, sir? Yes, we know that there is a decline of antibody type concentration over time. That's normal. It happens in all infections. But because we are being re-challenged with new viruses, which have some changes in the spike protein, they are able to partially evade some of those antibodies as well. So you have two things going on. First of all, the antibody levels are declining, and you have viruses which are a little adapted. For example, B117 variants or B617 variant in India. So the new variants added on top of the loss of antibodies is probably the main reason. And yes, the less severe the infection, the lower the antibodies. That's well known. So if you had a very severe infection, your antibodies may last longer and give you protection next time. But yes, a lot of asymptomatic infection means low levels of protection, probably. In such a case, if the vaccination will also have the similar phenomena, similar impact, like after some time, 6 months or 8 months, the vaccine, the immunity generated by the vaccination may also come down to a level Yes. that a person may get next round of infection. Yeah, I believe so. I think this is going to happen. The time frame is unclear, but anywhere between 6 and 12 months or 6 and 18 months, I think the antibodies from vaccines will also start to fall, and you may become infected again. But again, as you said, the protection from severe disease and death is probably still going to be there for some time, because that is not necessarily dependent on neutralizing antibodies. Okay. Thanks for Yeah, your opinion. I also have I have also one question for you, Dr. Ravi. Can you hear me? Yes. Yeah, Hello. actually, I wanted to ask about the variants, because there are a lot of confusion about the variants. So far, as we have seen, that is there any variant which can evade the neutralizing antibodies? Well, some of them can. I mean, the one in India is partially able to avoid antibodies. There's B617, which is increasing. There is certainly an element of immune evasion. That's why probably reinfection is happening, and it's probably why some vaccinated people are becoming infected more frequently. So that is certainly an element. I still think that it's not necessarily contributing to additional death necessarily, but Right. but there are mutations there. There is one mutation there in the cleavage site which might make the virus more transmissible, and it may lead to younger people being infected as well. There are things happening in these viruses. For example, the UK variant and the Indian variant both have a key mutation in the cleavage site, which may be important. So do you think that because we have not sequenced a lot of virus sequences from India, just 10 to 15,000 sequences are available at the moment. Do you think that this is also restricting our ability to understand the nature of the virus in India? I think to some extent, but I think that, of course, for public health standpoint, the most important thing is for distancing and vaccination. That's where the money should really go, because all of these variants will be suppressed by those interventions. There are very few interventions that are going to be specific to a type of virus, even though it's nice to know, interesting to know, helps you understand how spread is happening. At the end of the day, you still have to, use the same measures. So Right. I don't think more money for sequencing is always the key. It's not going to solve big problems. Yeah, at least what I understood that because this just to know about the breakthrough infections, whether there is some specific way, because at the moment in India, I think hundreds of variants are running, because we have so many infections that
the virus is mutating everywhere, and then they might have got because the positive selection is working on them heavily. So there might be some mutation which are helping them to survive. So, Yeah. So at least if we could sequence more, then we would be able to know that the people who have been vaccinated, which is the most prominent variant which is infecting to the vaccinated people, right? Yeah, I mean, there is sequencing going on. There are 10 centers now with INSACOG. I mean, they're making some efforts. So I think it's good. I don't think, India needs to be trying to catch up with the US or the UK in terms of sequencing. I think different needs are different needs, So I think intelligent targeted sequencing is important, and to know what's there, as you say. And then, the key mutations will be needed for the next generation of vaccines. That's the key thing we need to do as well. Correct. Which requires surveillance at global scale, not just in India. So yeah. Right. Aman, one second, sir. Aman, can you please? We have summarized the most popular and commonly known variants, and there was a question which was to come later on, but I think the time has come to ask the question to Dr. Ravi now. Aman, can you show the PPT, the slide particular, in which we captured most commonly known variants? Please put it on the display mode. So, Dr. Ravi, the question is very simple for you to answer, but it is very difficult for us to understand. That is, many terms are thrown into public domain, and for people like me, the common people who are not from the medical field, find it difficult to understand these terms like variants, strains, and mutants. So these B117 or B1351, etc. So what you see, these are the variants or the strains or the mutants. And you also mentioned this one, but E1617. So I wanted to understand from you how a virus can bypass the immune system, particularly what is the mechanism that it has got that it can not be detected by our antibodies. Yeah, well, so the question is a good one. Why are there so many variants? Because the predictions from looking at the mutation rate from last year was that this is a very slow moving virus, slow mutation rate. So the reason this is all happening is because we and others described the fact that you've got chronic infection. There are people out there who get long-term infection, and if you're infected for 3 or 4 months, the virus is essentially learning how to adapt to the immune system within a host. So we think that within host adaptation is important for generating multiple mutations in one virus. And that is how you get, then when the person transmits the virus to someone else, then you get a chain of infections, and the virus is very different, and that's why it's defined as a new variant or a new strain. Because of the fact that there's a lot of evolution happening in a short space of time in one person, where there is pressure from the immune system. And of course, the reason that the escape happens is because whenever these viruses make copies of themselves, they make errors, mistakes, and especially RNA viruses like this one. So it's a natural mistake mechanism of copying the genetic code, and some of the mistakes are advantageous for the virus. They enable the virus to escape antibodies. They make it replicate faster. So those mutations are selected by Darwinian evolutionary selective pressures, or positive selection, as Dr. Gyaneshwar said. So that's how it happens. Other viruses do the same. We worked in HIV for many years. HIV is the toxic virus for having high rates of mutation. So it's classic evolution. Okay, thanks. But chronic infection is the key thing. So chronic infection, most respiratory viruses, they are causing infection and they're gone. You either die or you live, and that's it. But in SARS-CoV-2, there's a lot of chronic infection. People are infected for weeks and months.